आपका इंटरेस्ट कैसे बना साइबर सिक्योरिटी फील्ड में? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया है तो कितना डिफरेंट रहता है कि वर्क कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रहता है? सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है या एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी? व्हेन एंड व्हाई टू चेंज एनी कंपनी? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोस्ट नितिश। आई एम अ सॉक एनालिस्ट एट बिल्डरसॉफ्ट। आज के हमारे गेस्ट है वेदांत। इज करेंटली वर्किंग एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर एट जीपी। सो हाय वेदांत, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi Nitish, thanks for having me here. First of all, I would say, and hello everyone. My name is Vedant Chen, and already Nitish has given my introduction. So I would say, like a little bit about me. I am from a very small town called Banda, and yeah, I am a having 3 year of experience in cybersec, and hope I'll contribute some of your questions that come into your mind. And yeah, that's it. आपका इंटरेस्ट कैसे बना साइबर सिक्योरिटी फील्ड में? एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आई वुड से लाइक इट्स अ स्टोरी ऑफ माय नाइन्थ स्टैंडर्ड। बाय द वे मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं आती बट या मतलब अगर वो स्टोरी सुनाऊँ तो चलेगा। आई मीन टू द ऑडियंस आई एम नॉट श्योर। हाँ, सो आप सब बताइए। तो एक्चुअली होता क्या था कि लाइक आई गॉट अ पॉकेट मनी ऑफ 10 रुपीज एवरी डे। सो आई यूज टू गो टू साइबर कैफेज। उस टाइम पे लाइक 2011-12 के टाइम पे साइबर कैफे ज्यादा होते थे। एंड आई हैव दैट फेसबुक अकाउंट। बहुत लोग क्या करते थे ज्यादा से ज्यादा उस टाइम फेसबुक, एंड आई डोंट यूज ऑलगुड एंड ऑल। सो आई स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक एंड सम ऑफ द डे आई गॉट फेस्ड बाय वन ऑफ द मेल। एंड मेरा उसके बाद फेसबुक हैक हुआ एंड आई गॉट द क्विक इंटरेस्ट। इफ माय फेसबुक गॉट हैक्ड विद दैट फिशिंग लिंक, इफ आई कैन हैक समवन, हाउ? एंड मैं कैफे में जाकर के ये जाके सीखने लगा यूट्यूब के थ्रू। और वहां पे पता चला कि HTML होता है, CSS होता है, एंड देन यू कैन क्रिएट अ फिशिंग लिंक। उसके बेसिस पे आप गिटहब पे बहुत सारे टूल्स होते थे उस टाइम पर, एंड यू कैन डू इट। सो वो मैंने सीखा एंड देन आई गॉट टू नो देयर आर सम फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू साइबर सेक। बट मैं उस टाइम पे उस टर्म को हैकिंग बोलता था, बट आई डोंट नो इट्स अ प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी फील्ड। बस मुझे पता था कि मुझे हैकिंग करना है, मुझे हैकर बनना है, एंड मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ करना है। सो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ बेसिकली, क्योंकि उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो बस ये पता था कि करना है, तो ओके ऐसे ही बना। ओके। आपकी कॉलेज आपने कहाँ से किया और उसके बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें बुरा लगेगा सुन करके, मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से नहीं था। मतलब मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड मतलब 11th में जब मैं हिंदी मीडियम में था तो आई चूज कॉमर्स। मैं मैथ साइंस से नहीं था। एंड देन मेरे स्कूल में एक ऑप्शन था, आइदर यू कैन चूज इंग्लिश और कंप्यूटर। सो मैंने उस टाइम पे कंप्यूटर चूज किया था। एंड देन आई शिफ्टेड टू भोपाल। भोपाल में BCA किया मैंने फ्रॉम BSSS कॉलेज। इट्स नियर बाय हबीबगंज नाका। तो वहां से मैंने BCA किया। BCA में वही जो सब पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ऑल कोर्स विद द बेसिक कंप्यूटर्स, लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, नॉर्मल असेंबली लैंग्वेजेस, और C++, जावा, पाइथन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड देन आप थोड़ा बिजनेस रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड एज वेल। तो यही सब मैंने किया था BCA में। BCA में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में था। आई ज्वाइन सम ऑफ द कॉन लाइक ओपन कम्युनिटीज, जहाँ पे मुझे मेरे थोड़े जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन कराया लाइक ओपन कम्युनिटीज से, लाइक ओवास्प हो गया या नन हो गए। तो ऐसे ओपन कम्युनिटीज मैंने जिस टाइम पे ज्वाइन की थी, तो ये स्टोरी थी मेरे कॉलेज ओके में मैं ओके। ऐसे आया था। कॉलेज के दौरान आपने इंटर्नशिप कहाँ पे करी? इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बताइए, आपने कैसे अप्लाई किया, क्या क्वेश्चन सो टैकल हुए? कॉलेज के दौरान मैंने बेसिकली 2 इंटर्नशिप की थी। एक मैंने MP साइबर सेल में की थी, एंड देन मैंने एक स्टार्टअप था जो आज के टाइम पे आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, मे बी दे हैव चेंज द कंपनीज नेम। अरिस्टी साइबर टेक करके एक कंपनी थी, अरिस्टी साइबर टेक प्राइवेट लिमिटेड। दे हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट कॉल्ड सीम सॉक बेस्ड अपॉन इलास्टिक सर्च एंड किबाना। एंड वो मैंने इंटर्नशिप जो आता है ना, इंटर्नशाला, उसके थ्रू से, इट्स नॉट अ ब्रांड प्रमोशन, सो मैं बता देता हूँ। मैंने उस टाइम इंटर्नशाला पे ढूंढा था तो आई गॉट सम इंटर्नशिप। उस टाइम पे मुझे इंटर्नशिप मिली थी एंड आई गॉट टू नो उत्कर्ष भार्गव। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट
entrepreneur right now in some of the companies. I'm not sure about the company, but yeah, he is one of the good founder. So उनसे मैं मिला था, and then afterwards I got to know a lot of things in cyber security. So प्रॉपर फील्ड पता चली थी मेरे को कि साइबर सिक्योरिटी में कितनी पर्टिकुलर फील्ड होती हैं रिलेटेड टू आपको क्या करना है, आपको किस में इंटरेस्ट है. तो साइबर सिक्योरिटी जितना हमें लगता है कि इट्स नॉट अ स्मॉल टर्म, इट्स अ वेरी बिग एंड वास्ट. ओके ओके, सो उसके बाद आपने आपकी प्लेसमेंट कैसे हुई? कॉलेज प्लेसमेंट थी कि आउटसाइड प्लेसमेंट आपने ली? थोड़ा सो वो एक बात एक्सपीरियंस। बोलूंगा, तो मतलब कॉलेज प्लेसमेंट ऐसा तो नहीं था कि मैं पर्टिकुलरली कॉलेज प्लेसमेंट में आज तक कभी बैठा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा कॉल सेंटर से रिलेटेड डेवलपमेंट वाले प्रोफाइल ज्यादा आते थे. तो मैं कभी मतलब कॉलेज प्लेसमेंट में कभी बैठा ही नहीं. बात करता हूँ मैं कैसे जॉब लिया, तो आई हैव मोर फोकस्ड ऑन दी स्किल साइड, क्योंकि आज के टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट साइबर सिक्योरिटी के लिए हायरिंग बहुत रेयर आती है इन दी कॉलेजेस. देयर आर सम ऑफ द कॉलेज जहाँ पर पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी के लिए आती है, लाइक एनएफएसयू. ये दे कम फॉर पर्टिकुलर टू साइबर सिक्योरिटी डोमेन. वह जहाँ जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रीम्स कॉलेजेस है वहाँ पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं जो एमएनसीज हैं टू हायर पीपल. But I'm not sure about the other colleges whether they come to hire the cybersecurity students. So वहाँ पर एक ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन का कि if they have a skill set related to particular stream, they won't come to the college and hire people. साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है where you have a skill set, you don't have to sit on the campus placements. You can directly go on the websites, you can directly go and reach out the people who are working in the domain, and you'll get a job. But it depends of course of your interest and your skill set. So मतलब मैंने जो किया था, I dropped like I completed my graduation in 2020. After that I applied in some Bangalore based startup. Luckily I got selected in that, and yeah, I mean I did couple of internships. After that I got a job. I cleared my OSCP certification and CRTP as well. So yeah. ओके ओके, उसके बाद आपकी जो पहली जॉब लगी उसमें क्या एक्सपीरियंस है? आपने वहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम किया? तो जो मैं पहली जॉब बोलूंगा वो मेरी कोई पेंटेस्टिंग जॉब नहीं थी. I working as an internship in some of the company, but there are some issues with that, so I dropped that and I came back to another job, and that was a trainer job. So I have to train students, I have to train government officials, I have to train different teams. So वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ऑफ एज अ जॉब, लाइक एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर आई गेट पेड in a some good amount of salary. But still that wasn't a job to, I would say. But like Mastercard was my first company, right? As a, to be very honest, if I'll say कि मैंने साइबर सेक में पेन टेस्टिंग ग्रुप में काम किया है, तो वो मास्टरकार्ड है. So yeah, that was my first job after like completing OSCP certification. सो मास्टर कार्ड में आपने किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया? क्या काम होता है एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर? और उसके बाद में भी आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया, तो सब एक साथ आप बता पाएँ कि कितने डिफरेंट डिफरेंट uh, रोल्स में क्या क्या काम करना होता है? So I cannot disclose a lot of things because it's company's policy होती है कि हम कुछ disclose नहीं कर सकते. But yes, there are a lot of good companies, and companies के अंदर as a pen tester, what you do as a bug bounty hunter, you have to know, you get an application, either it's a black box, blue, gray box, or white box. You have to identify the vulnerabilities. After that vulnerabilities, you have to make a report and developer fix those vulnerabilities within the SLA period and something. So it depends. I mean, there are a lot of certain job roles as well. Uh, some of the application security, they asking for threat modeling, they're asking for SCA, they're asking for SAS, they're asking for DES, and they also require the network, infrastructure, cloud security, uh, IAC, infrastructure as a code. And they also require some messaging stuff. It depends on your profile, what they're asking for. It depends. सो अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको थ्रेट मॉडलिंग आनी चाहिए, आपको पेन टेस्टिंग होगा टॉप 10, यू हैव टू फेमिलियर विद CWEs, मिड-रे अटैक्स. सो या, दिस थिंग्स शुड हैव दैट नॉलेज. एंड अगेन इट डिपेंड्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. इट्स ऑलवेज बी हैकर माइंडसेट. मतलब आप क्या करते हो, आप रिकॉन करते हो, आप इन्यूमरेट करते हो, आप एक्सप्लोर करते हो. एक्सप्लोर करने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन एन एप्लीकेशन, राइट? तो अब आप क्या करोगे, उसके लिए बर्ब सूट का यूज करोगे जो नॉर्मल है.
and then it depends on your mindset how you find identifying the vulnerabilities. Whether it put your input validations, misconfigurations, session hijacking, and session related issues. So that's all process is going to be as a pen tester, right? अगर like जो organizations होते हैं उसमें you can take a call with the developers and they will explain you how they implemented their security. So you make a comment and you have to tell them कि how you can no make enhanced. To be very honest, you have to enhance that security as well. And कुछ भी होता है related to security, you are the responsible person for that. And trust me, being a cyber security guy, you cannot guarantee someone it's 100% security, right? आप ये नहीं कह सकते कि whether if you did something you are 100% secure. It's not possible. So people are focused on the security part. As you know कि हमारी गवर्नमेंट ने भी अभी कुछ टाइम पहले एक डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी को लाया है इन लोकसभा, and it's going to be coming in sooner into the public organizations as well and the private organization as well. So yeah, we'll look into it. तो यही होता है कंपनीज में भी कि यू हैव टू वर्क ऑन इट, लाइक आप सॉक में हो जैसे, तो देर आर सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो आप डे टू डे बेसिस पे अपने बीयू टास्क में यूज करते होगे. देर आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट टास्क, लाइक डीएलपी हो गया, वो अपने अलग टूल्स यूज करते हैं. सॉक अपने अलग टूल्स यूज करती है, आईआर अपने अलग टूल्स यूज करता है, डैस्ट के अलग टूल्स होते हैं, सैस्ट के अलग टूल्स होते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड इंजीनियर में भी डिफरेंस होता है कि वो एक इंजीनियरिंग, सो वी हैव टू डू इंजीनियरिंग जॉब एज वेल बाय राइटिंग अ कोड एंड स्क्रिप्टिंग. बट एनालिस्ट में दीज आर दी नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड एंड रन दी स्कैन्स एज वेल. सो ये एक मेजर डिफरेंसेस होते हैं. सो इट डिपेंड्स ओके ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ओके ओके. सो आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, तो कितना डिफरेंट रहता है कि वर्क कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि काम करने के लिए? वर्क कल्चर काफी इंपॉर्टेंट रहता है. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग समथिंग टू लर्न, it will be really helpful for me, right? So I can prefer to go to office most of the days. But if I'm not getting and I'm not learning anything new and I'm doing just my BU2 job, then why should I go to office and why should I go prefer to going to office? So I would suggest जहाँ पे आपको सीखने मिल रहा है, either it will be your home or it will be your office. Prefer them where you are getting to learn, right? अब डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर भी कि वो अपने एम्प्लॉयज को कितना मोटिवेट करते हैं टू लर्न समथिंग न्यू. लाइक आई वाज बीइंग इन एमएनसी एंड दे टोल्ड मी to do something which is related to certifications and which is I work as those companies which is non-technical as well, where they morely focus their operational works, not in a your personal development. It depends on you, like कि आपको वो चीज करनी है नहीं करनी है, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे करने में. So it depends on organization. Again, everything आपके I'm not sure that your organization to told you to do it, but yeah, it depends most of the time. सो आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, और उसके बारे में बता दीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है उस सर्टिफिकेशन में, आपने कहाँ से पढ़ाई करी वहाँ उसकी? तो मेरी पहली सर्टिफिकेशन हुआ था जो मैंने ओएसीपी किया था. वो उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि आई वॉज अ ट्रेनर एंड आई एम डन बीइंग विद दीज प्लेइंग विद दी वल्नरेबल लैब्स. लाइक मैं एक्सप्लेन करते करते थक गया था कि लाइक आई एम डूइंग द सेम शिटियस जॉब एवरी डे. आई एम टू एक्सप्लेन सेम वल्नरेबल बग. सो आई डिसाइडेड टू डू एन ओएसीपी where my colleagues also purchasing that OSCP. So I thought, okay, let's do it. And उस टाइम कोविड था luckily. एंड आई वुड से कि बहुत लोगों के लिए वो बहुत गलत साबित हुआ, बट आई डोंट नो, आई वुड से इट्स लकी फॉर मी बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. आई बीइंग स्टे इन माय होम, आई गॉट टाइम टू ट्रेन पीपल. जब मैं ट्रेन कर रहा था तो मेरे बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हुए. एंड जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपको लगता है ना कि लोगों के दिमाग बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं. लाइक अगर मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करूंगा, यू विल थिंक लाइक डिफरेंट वे, and when you ask me those questions I have to respond you back, right? So I got to another mentality, okay fine, this can be also happen. So वो मुझे बहुत बड़ा हेल्प किया ओएसीपी में. देन आई वुड से अगर आप एक न्यूबी हो एंड यू हैव टू यू डोंट नो हाउ टू डू पेन टेस्ट, so I will recommend for machines there's a something called THM, try hack me, go for it, you can do it. एंड अगर आपको एक रिस्पॉन्स मिल गया है कि आपको पूरे प्रोसेस समझ में आ गया कि पेन टेस्ट ऐसे किया जाता है, ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू गेट फोकस्ड ऑन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. देन
I would say there are two resources where it's first is free and first is second one is paid. So I would recommend to not to pay someone instead of whenever you are getting a free stuff. So free में आप कोर्स फिगर लैब कर सकते हो, that is free of cost. एंड अगर आपको पेड बन जाना है तो आई वुड रिकमेंड पेन टेस्टर लैब. इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न फॉर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. देन अगर आप वेब के बाद एंड यू हैव टू गो विथ एक्सप्लॉयटेशंस एंड अगेन अब आपके पूरे माइंडसेट बन चुका है कि अब मेरे को कुछ सीखना नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी है टू क्रिएट माय ओन प्रोसेस. So you can go on the hack the box, or you can, if you don't want to go pay for hack the box, you can go on the Well hubs and Well machines, download those OVAs, put into your virtual machines and start hacking it. Those are the best resources you can get. So मैंने पहले OSCP की preparation 6 months में complete की थी with the help of THM and hack the box, and after that I did, and there are a lot of people who motivated me and supported me while doing that. एंड उसके बाद मैंने अगला सर्टिफिकेशन CRTP किया था, जो कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर किया था. एंड या दैट हेल्प मी अलॉट इन आई थिंक इन 1 or 2 months I completed that CRTP as well. ओके ओके, सो सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है या एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी? अगर आपके पास स्किल्स है तो सर्टिफिकेशन आपको सिर्फ HR को बाईपास करने के लिए काम आएगा, राइट? इफ यू हैव अ सर्टिफिकेशन सो मेक श्योर कि आपके पास आपका जो इंटरव्यूअर है वो भी आपसे उतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हाई रखता है. सो इफ यू हैव दैट सर्टिफिकेशन मेक श्योर यू आर नॉट cheating onto the interviewer. He would expect you to respond all the answers, like not all the answers, but yes, most of the answers. Depends on your experience, what you have did. So again, experience matter करता है when you are switching to the company. Certification matter करता है when you are getting your first job. Because if you want to prove your skills, how you will prove it? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको SOC आता है, कैसे आप प्रूव करोगे? You have some certifications or you have some skills, right? यस उसके यस. बेसिस पे आप वो कर सकते हो. तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि सर्टिफिकेशन यहाँ पे यूटिलाइज आता है. And yeah, I mean, there are a lot of things where you don't have to be certified. There are a lot of companies who can hire you without the certification as well, based upon your communication and your technical knowledge. I mean, if you can explain them that this is the things that I can do and this is thing what I did, it's good. It's easy to get a job for you. ओके ओके, सो व्हेन एंड व्हाई टू चेंज एनी कंपनी? कब हमको कंपनी लगे कि स्विच करने का है? जब आपके लिए वहां पे लर्निंग खत्म हो जाए, मतलब टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, जब आपको लगता है कि वहां पर आपकी लर्निंग खत्म हो गई एंड यू वांटेड टू लर्न मोर, स्विच दी एंड टेक दी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, right? Like I was a pen tester and I was not learning something new. So I wanted to learn something new, and that hunger makes me to know learn something, a lot of stuff in cloud security. So I changed this. I switched the company. So it like आपके ऊपर है थोड़ा. ओके मतलब मैं ओके, रिकमेंड करूंगा कि जब आपकी लर्निंग होगी तब आप स्विच कर सकते हो. सो कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज एंड टॉक्स आपने अटेंड करी और कितना इम्पोर्टेंट होता है इनको अटेंड करना? तो कॉन्फ्रेंसेस मैंने दो ज्यादा अटेंड किए हैं. मैं ओपन कम्युनिटीज के बारे में बताना चाहूंगा. ओपन कम्युनिटीज लाइक नल हो गए. लोग नल, मैं पहले बात करता हूँ, नल से स्टार्ट करता हूँ. सो नल एक वो कम्युनिटी है जो ओपन सोर्स है एंड एनीबडी कैन गो ऑन दैट कम्युनिटी. सबके लोकल चैप्टर्स होते हैं. इफ यू वांटेड टू नो अबाउट मोर यू कैन गो ऑन null.community एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ local chapters in your city. After that, OWASP also have their local chapters. Hack the Box have the local chapters. I'm not sure लखनऊ में है या नहीं है जहाँ आप रहते हो. नल का है I believe, and OWASP भी है. OWASP लखनऊ and नल लखनऊ, right? And वहाँ पर आप जाकर के you can give a talk and you can sit over there and get a talk. Like you can listen over there and create a network. Like अगर आपको कुछ सीखना है, आपको नेटवर्क पता होना चाहिए. आपके उस पर्टिकुलर डोमेन में कितने लोग हैं, आप उनसे सीख सकते हो. एंड लाइक जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, दे आर हैप्पी टू नो हेल्प अस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सेकेंड ईयर में था जब मुझे इन कम्युनिटीज के बारे में पता चला था. आफ्टर दैट कोविड आया, सो आई यूज टू ruin माई सिंगल संडे टू अटेंड दोज थिंग्स. उसके बाद मेरे को सीसाइड्स के बारे में पता चला. when Seasides is a conference, India's best conference, I would say India's most lovable conference in terms of free. Like you will get the workshops, every workshops you will get in free of cost. You just have to come to Goa, you have to attend that, and
you will get a lot of things, like you will get the networks, you will get the knowledge, you will get the swags, जिसके लिए लोग आते हैं mostly, and to know make your own network. After that, nullcon, I attended nullcon as well, and yeah, I am planning to attend some black hat or defcon as well. ओके This year I was luckily I got selected in threadcon, so I being a speaker at threadcon in Nepal. So yeah, so agar if people are seeing from Nepal, you must go to ThreadCon. It's happening every year in September. So yeah, you guys can explore ThreadCon as well. ओके सो बिगिनर्स को कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, स्टार्टअप, सर्विस बेस या एमएनसी? उनको कहाँ लर्निंग ज़्यादा मिलेगी एज अ बिगिनर? तो कितना It I mean ये इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आई वुड से सर्विस बेस्ड पहले आप ज्वाइन करिए. व्हाई आई टेल व्हाई सर्विस बेस्ड, बिकॉज you have to deal with everything. You get the projects, you have to learning capabilities आपकी बढ़ेंगी, you will get the projects, you will get a lot of projects. Then you will go to product based, see the environment, how the product environment works, and then switch to startup. Because when you go to a startup, you have a lot of responsibility to do. And after coming from a service based to product based and to going to a startup, it add a lot of value, right? Because you have gained a lot of experience while dealing with the client, and with that skill set you are making doing the pen testing, because मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट्स आप में काम कर रहे होते हो. आपको एक प्रोजेक्ट नहीं मिलता, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं. आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन, टिक क्लाइंट, क्लाउड, threat modeling projects, एक security architecture, and then you can put into those things into a product based company. You can showcase your skill set in product based, and after that you can take all things into a startup and you can use it. सो आप कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करते हो चीज़ों को लर्न करने के लिए और स्टे अपडेटेड इन दिस फील्ड? तो जो मैं फॉलो करता हूँ, पहला तो पोस्ट फिगर का एक ट्विस्ट पोस्ट आता है, वो मैं एक फॉलो करता हूँ. देन टेलीग्राम के कुछ चैनल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, यू गेट अ लॉट ऑफ द हैकर न्यूज़. एंड देन Discord, I would say Discord is one of the good resource. Uh, then you can use of I'm not sure whether you heard about it, hacklido.io, and after that infosec write-ups in Medium. So yeah, these are the most resources I would say. ओके, करियर ग्रोथ कैसा है इस साइबर सिक्योरिटी में एज Uh, कम्पेयर टू अदर फील्ड? इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास कि मैं ये बता पाऊँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सिक्योरिटी सब कुछ है. like I can say security is just a myth, but to be very honest, आज के जो स्कैमर्स की अगर मैं बात करता हूँ, जो पब्लिक अपीयरेंस है कि बेस्ड अपॉन how you think growth in cybersec, it's huge. I mean, it's totally huge. In India, it's definitely huge. That's what my perspective. I'm not sure others, but it's literally huge. बहुत आगे इसको. और मैं बस एक चीज बोलूंगा कि साइबर सेक को आप सिर्फ पेन टेस्टिंग से रिलेट मत करिएगा. साइबर सेक पेन टेस्टिंग अकेले नहीं है, साइबर सेक में बहुत कुछ आता है. साइबर सेक में प्रोडक्ट सिक्योरिटी आती है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी आती है, नेटवर्क सिक्योरिटी आती है, और आईटी सिक्योरिटी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी आती है, आईओटी हार्डवेयर. एंड अगर मैं कंप्लायंस? बात करता हूँ तो compliances, and it's like there's a in cybersec there are three teams, red, blue ब्लू? and purple, राइट. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बन चुके हैं, बट जो मेजर टीम्स हैं ब्लू, रेड एंड पर्पल है. सो और अगर इसके अंदर हम डिस्क्राइब करने जाएंगे तो इट्स वेरी वास्ट, राइट. सो इट्स अ ह्यूज ग्रोथ इन साइबर. ओके ओके. सो जो बिगिनर्स हैं और जो इस फील्ड में नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? बेसिक कि ये चीज़ तो आनी चाहिए आपको इस फील्ड में इंटर होने के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें? आई वुड रिकमेंड अंडरस्टैंडिंग एन एप्लीकेशन, कि एक एप्लीकेशन कैसे काम करता है. एंड देन साइबर सेक के में जो मेन चीज है वो एक नेटवर्किंग. आई मीन यू शुड एटलीस्ट, एक बिगनर जो होगा वो इतना सोचता होगा कि एक नेटवर्क कैसे काम करता है, हाउ दिस इंटरनेट वर्क्स. इतना बेसिक पता होना चाहिए. अगर उसे कंप्यूटर चलाना आता है इट्स गुड, उसे एक फाइल क्रिएट करना आता है इट्स गुड. या दैट्स इट इनफ. उसके बाद वो खुद चीजें सीखता चला जाएगा इफ यू हैव इंटरेस्ट. और
बहुत मेजर पॉइंट होता है कि लोग क्या सोचते हैं ना कि मेरे को कोडिंग नहीं आती, तो मैं चलो साइबर सिक्योरिटी में चला जाता हूँ क्योंकि उसमें टूल से रिलेटेड काम होता है। ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट चीज होती है आपका स्किल, आपका माइंडसेट। इफ यू डोंट हैव दैट माइंडसेट, इट बी अ वेरी नो difficult task to learn. If you don't have the mindset, firstly get that mindset. Cyber security is not all out ethical hacking and something. It's morely focused on how you secure. Right? Yeah. तो जो ओके, नए लोग हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि फोकस करो अपने थिंकिंग पे। इफ यू हैव अ इंटरेस्ट, अगर आपके पास वो एक आग है सीखने की, तब भी इस फील्ड में आओ आप। कैसे रिज्यूमे और बना सकें बिगनर्स और प्रोजेक्ट शो कर सकें उसमें, ऐसा जॉब पाने के लिए या इंटर्नशिप पाने के लिए, क्योंकि रिज्यूमे ही बनाना सबसे कठिन होता है। तो आई मीन आई कैन से skills, add these skills, play CTF, add your skills. uh, do bug bounties, add your hall of names, add your reported bounties where you have got rewarded. Say I got a hall of fame where you have been. So firstly, you have to write about yourself, what your visuality and what you are basically in some lines, like 3 to 4 lines. After that, write your experience, what you have, then write your skills, and like the area of interest you have and what you did till now. After that, your education thing comes at last. Like nobody wants to know what you did, right? Nobody wants to know कि आपने क्या किया है। आपको क्या आता है उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड आप उनको क्या प्रोवाइड करा रहे हो ये सब कोई चाहता है। आई मीन इफ आई से कि आई नो जीआरसी, एंड आज के टाइम पे जीआरसी वाले लोग बहुत कम है। लाइक दे genuinely want, most of the people, they are theoretical and GRC, and they want risk management things. So if you know that thing, if you can help the companies, go write it down on the top of the, like, right? I have this particular thing and I know that, and how you can help them, how you can help them to mitigate their risk, how you can help them to secure them. So that are the things that you should definitely mention in your resume. सो लास्ट क्वेश्चन कि रोड मैप आप बता सकें एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए, कि यहाँ पहले ये चीज़ करो, फिर ये, देन आप एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर जरूर बन सकते हो। Like बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, आई कैन रिकमेंड कि आप पहले एक प्रॉपर नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क्स पढ़ो, देन लर्न हाउ इंटरनेट वर्क्स, बेसिक थिंग्स ऑफ इंटरनेट, HTTP, डिफरेंस बिटवीन HTTPS, what is OSI layer, models, IP subnetting and all. After that, you should go on, learn a operating system. It should be a Linux, it could be a Windows, depends on your choice. I would recommend Linux. Learn Linux, and then you should go on web, like how things works, right? एक application बनता कैसे है? If you know how to build, it's very easy to break those things. तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको have to डेवलपर बनना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड दी कोड। तो एक आप जावास्क्रिप्ट के साथ डील कर सकते हो, आप पाइथन के साथ डील कर सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोड। आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखो टू अंडरस्टैंड द कोड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड देन you should jump on web application part. After that web application, you can go on the vulnerabilities and yeah, exploitations. Then you can go on OWASP top 10, read about it, OWASP top 10, CWE Swift 25, and yeah, that's this सर्टिफिकेशन is भी my कुछ आप बता सको कि ये सर्टिफिकेशन ज़्यादा हेल्पफुल है। so I would say I will recommend to do a certification which is more practical way instead of a MCQs, right? Because what I feel, if you have a situational based options, like if you haven't did a practical job, then how you can do it? That's what my perspective is. And ठीक है, certifications करना है, you can go relate. If you don't have that much of money, you can start with small EJPT. Then e-learn certification was much uh, easy available and lower cost instead of the big certification. So yeah. ओके, थैंक यू सो मच वेदांत, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमको दिया, इतना इंसाइट शेयर Thank you, sir. करी।